Good morning. So we'll be starting human rights as a global issue, as a global concern. And in this, generally, the questions which are asked is, they can ask you one question on International Criminal Court. We have already done ICC, so we won't get into that. But one thing that they can also ask is, what is the difference between Human Rights Commission and Human Rights Council? ठीक है, तो ये बहुत confusion रहता है सबको. And what were the limitations of Human Rights Commission and why Council came into existence? दोनों की working का scope क्या है? Then why America keeps coming out of Human Rights? पहले Commission से बाहर आ जाता था, Council से बाहर आ जाता है. What reforms can be done? Then one question which can be asked or which can be framed around that apart from UDHR, जो कि Declaration of Human Rights तो है, what other articles or what other factors are there within UN which make UN the champion of human rights, etc. तो ये सारी चीजें हमको देखनी है. And when we are talking about UDHR, you see UDHR is not legally binding. वो कोई binding नहीं है. It's more like a declaration. हमने declare किया. What is binding is the two conventions which are coming out of it. One is International Covenant on Civil and Political Rights. Other is International Covenant on Socio-Economic Cultural Rights. वो दोनों binding है. अब how we came to UDHR actually? You see, when UN got established, UN Charter came into existence, there was a debate that do we need a separate Bill of Rights और ये UN से ही काम चल जाएगा. तो बहुत deliberately UDHR was delayed. Why UDHR was delayed? Because they wanted Russia to be on their side. They wanted Russia to be the part of United Nations. And Russia was not willing with the language and a separate declaration of human rights क्योंकि Russia को ये लगता था that this might be used against Russia in terms of interfering and all. But धीरे-धीरे when Russia joined UN and Charter में भी बहुत जगह rights का mention हुआ, eventually it was decided that we can have a separate bill or separate declaration on human rights. अब इसके लिए ये declaration लाने के लिए भी एक कमिटी बनाई गई, एक सब कमिटी बनाई गई. This committee was established under UN Human Rights Commission. ठीक है? अब ये जो हम कमीशन की बात कर रहे हैं, this commission functioned till 2005. Starting से है 2005 तक चला. But there were many recommendations against the commission, and that is why in 2006 Human Rights Council replaced UN Commission. अब कमीशन की क्या प्रॉब्लम्स थी ये सब हम देखेंगे एक करके. मेजर प्रॉब्लम ये समझ लीजिए कि एक तो स्टेटस ऑफ कमीशन, ठीक है. कमीशन यू कैन से वाज अ सबऑर्डिनेट बॉडी ऑफ इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो उसकी अपनी कोई बहुत इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं थी. फिर उसमें वोट फिक्सिंग चलती थी. कैसे फिक्स होते थे? आपस में डिसाइड कर लिया कि इसको मेंबर बनाना है. तो देयर वर मेनी कंट्रीज हु केप्ट ऑन बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ द कमीशन डिस्पाइट हैविंग वेरी पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स. फिर साल में वो एक बार मिलते थे, मे बी फॉर 5 to 6 वीक्स. फिर मोस्ट ऑफ द वर्क बहुत ज्यादा रिकमेंडेटरी होता था, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी. तो योर काउंसिल वाज मेड इवेंचुअली. इट हैज 47 मेंबर्स. सेकेंडली इसमें आप वोट फिक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये यूएन जनरल असेंबली के अंडर में आ गया, नॉट अंडर इकोसॉक. अब यूएन जनरल असेंबली सिंपल मेजॉरिटी से मेंबर्स चूज करती है एंड दे व्हेन जनरल असेंबली गोस फॉर वोटिंग, दे गो फॉर सिंगल वोट एंड अ सीक्रेट बैलेट. बट उनको ये रिकमेंडेशन दिया गया है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द क्रेडेंशियल्स ऑफ कंट्रीज कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कैसा है, ह्यूमन राइट्स स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किए, क्या काम नहीं किए. ये सारी चीजें देख करके ही आप उनको मेंबरशिप दोगे. सेकेंडली कमीशन में देयर वाज नो लिमिट कि एक मेंबर कितनी बार भी कमीशन का मेंबर बन सकता है. यहाँ पे द पीरियड ऑफ मेंबरशिप हैज बीन लिमिटेड. हर कंट्री 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली 3-3 साल के लिए मेंबर बन सकती है, बट नॉट आफ्टर दैट. दे विल हैव टू वेट एंड वापस से साइकिल वगैरह जब पूरी हो जाएगी देन ओनली दे कैन बिकम द मेंबर. अगेन सम मोर थिंग्स हैव बीन डन टू स्ट्रेंथन ह्यूमन राइट्स. अब जैसे कि कैसे पता चलेगा कि कंट्रीज जो हैं वो ह्यूमन राइट्स चार्टर या कन्वेंशन पे ओब्लाइज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लॉ, इट्स अ वीक लॉ. तो सब चीज कंट्रीज की वॉलंटरीनेस पे डिपेंड करता है. So they came up with some mechanism. One such mechanism is known as UPR, Universal Periodic Review. वो क्या होता है? There can be a short question on that, 10 मार्कर जैसे आ गया, write a short note on UPR. क्योंकि UPR जो होता है उसकी साइकिल चलती है, ठीक है, 4 साल के लिए कई साइकिल्स में होता है. तो फोर्थ साइकिल is currently going on between 2022 to 2026. So you can expect 10 marker on what is UPR, क्या mechanism है, so on so forth. Got it? ये हमारा broad agenda रहेगा human rights पे. 2 questions generally can be asked. One is within UN आपको कहाँ-कहाँ human rights के बारे में जानने को मिलता है. Secondly, what is the difference between commission and council? What were the limitations of commission? Is council functioning better? कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि ये सिंपल मेजॉरिटी से मेंबर बन जाते हैं. गेटिंग सिंपल मेजॉरिटी इन जनरल असेंबली इज वेरी इजी. तो भाई अमेरिका कह रहा है कि इसको स्पेशल मेजॉरिटी करो. फिर अमेरिका कह रहा है कि जब भी मान लीजिए सपोज 4 सीट्स गॉट वैकेंट इन योर काउंसिल, अमेरिका कह रहा है कि आप 4 सीट्स के लिए 10 कैंडिडेट्स बुलाओ. कैसे? ताकि कॉम्पिटिटिव वोटिंग हो. एंड ओनली दोस कंट्रीज विद फेयर क्रेडेंशियल ऑन ह्यूमन राइट्स, ओनली दे गेट अ वोट टू सिट ऑन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ताकि इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि फिक्सिंग चालू है. गॉट इट? दिस इज व्हाट वी हैव टू सी जनरली टुडे. गॉट इट? तो मुझे बताइए आप लोग का वो सब हुआ है करल वासक का 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ये सब हो गया है, कल्चरल रिलेटिविज्म वाला ये सब हो गया ना. तो सब हम इसमें डील नहीं करें. गॉट इट? इसमें लिखिए ह्यूमन राइट एज अ ग्लोबल इशू. Human rights as a global issue. Right, the context. Right, the concept of human rights. The concept of human rights became the narrative of international politics. When USA started taking active interest in the promotion of human rights as one of its foreign policy agenda. ठीक है? देखो, it must be noted that League of Nations did not clearly identified
clearly identified protection of human rights as one of its objective, ठीक है? देखो, it is UN which will actively make human rights as a dominant agenda. Human rights as a dominant agenda. इसमें लिखे next point. देखिए, nonetheless, in Woodrow Wilson's 14-point program, right to self-determination was promoted. Right to self-determination was promoted, yet it was very selective. For example, USA did not support India's right to self-determination. Next point. Because of these selective agendas only, that even today, the universality of human rights is questioned. Now let's understand, because UDHR इन सब के आने से पहले भी there were a lot of anti-slavery movements happening across the world, and some NGOs came up who started talking about anti-slavery. तो human rights से पहले भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं slavery used to be an agenda in terms of human rights. बाद में UDHR और UN में we started explicitly mentioning human rights. Got it? तो यहाँ पे लिखिए, next heading डालिए, write a question. देखो, how did the concept of human rights evolve? ठीक है? पहले तो नहीं था, क्या था पहले? Privileges थे and divine rights of king and church हुआ करते थे. बाद में they started talking about the rights of human and man. ठीक है? तो लिखो point number 1. देखो, in medieval time there were divine rights and privileges of the king and church. Second point. Because later on, philosophers talked about rights of humans. Let me go man. For example, such rights were declared in US Declaration of Independence 1776 and French Declaration of Rights of Man 1789. Right, next. Because eventually anti-slavery movements picked up. And anti-slavery society was established in 1837. Because it is considered first ever human rights NGO in the world. Okay? Because in 1926, slavery was abolished. Okay? Right, next. Because League of Nations talked about protecting minority rights. Human rights की बात नहीं कर रहे हैं जनरली, minority rights की बात कर रहे हैं. ठीक है? Right, next. देखो, around 1940 there was a debate that a separate bill on human rights is required. But it was delayed until 1948 because USSR was not comfortable. Okay? Next one. Even then, UN has exclusively mentioned human rights. Okay? Because it is said that the provisions concerning human rights
run throughout the UN Charter, run throughout the UN Charter like a golden thread, like a golden thread, underline like a golden thread. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सी कि यूएन में कहां-कहां प्रोविजंस मिलते हैं. तो अगर आप देखोगे सबसे पहले तो यूएन के प्रीएम्बल में ही है, देन आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 55 56, ये तीनों की जब आप कंबाइंड रीडिंग करोगे तो तीनों मिलकर के ये बोलते हैं कि ना केवल यूएन बट मेंबर्स की भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है दैट दे शुड बी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, देयर एजेंडा विल बी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब इस पर ये डिबेट चलती है कि क्या लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह ने भी ओपिनियन दिए हैं दैट दे सीम टू बी बाइंडिंग बट देयर इज नो क्लैरिटी. देन इकोसॉक के प्रोविजंस हैं जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि सोशल काउंसिल को ह्यूमन राइट्स पीस प्रमोट करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए. सिमिलरली ट्रस्टीशिप काउंसिल जो आज एग्जिस्ट नहीं करती है, उनका भी एक मैंडेट था टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स. तो ऑल दीस थ्रेड्स यू कैन फाइंड इन यूएन चार्टर थ्रूआउट व्हिच मेक्स श्योर कि यूएन रिमेन्स द बेस्टियन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन. गॉट इट? तो इसमें पॉइंट नंबर 1, यूएन में हमें कहां-कहां ह्यूमन राइट्स देखने को मिलता है. हालांकि यूजलेस है ये सब, तो ठीक है, सिलेबस में तो करना है. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखो, द प्रीएम्बल ऑफ यूएन, द प्रीएम्बल ऑफ यूएन चार्टर begins with right inverted comma, we the people of the United Nations, we the people of the United Nations, and preamble further reaffirms, preamble further reaffirms faith in fundamental human rights, faith in fundamental human rights, comma, dignity and worth of human person, dignity and worth of human person, and in the equal rights of men and women, and in the equal rights of men and women. Okay, next, Article 1 of UN Charter makes one of the prime purpose of UN, one of the prime purpose of UN as promoting and encouraging, as promoting and encouraging respect for human rights, respect for human rights. अब यहां पे देखो, what is the significance, what is the significance. ठीक है, तो लिखो, देखो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 is putting the promotion of, is putting the promotion of the respect for human rights, the respect for human rights on the same pedestal, on the same pedestal, PEDSTL, as the maintenance of international peace and security, as the maintenance of international peace and security. ठीक है, तो ये emphasize कर रहा है that international peace and security is not possible if fundamental human rights are not respected, not promoted. तो UN cannot, ideally speaking, cannot pick and choose कि ये peace चाहिए कि human rights चाहिए, सब चाहिए. This is the importance of Article 1. Right, next, third point, next point. देखो, it is one of the responsibilities, it is one of the responsibilities of the General Assembly, of the General Assembly to initiate studies, to initiate studies and make recommendations, and make recommendations so that realization of human rights, realization of human rights and fundamental freedoms for all, and fundamental freedoms for all is achieved through international cooperation, is achieved through international cooperation. ठीक है, लिखो for this chapter 9 and 10, chapter 9 and 10 of UN Charter have elaborate role for ECOSOC, elaborate role for ECOSOC. ठीक है, नेक्स्ट देखो आर्टिकल 55 and 56, आर्टिकल 55 and 56 of UN Charter create almost a binding condition, almost a binding condition for promotion of human rights, for promotion of human rights. ठीक है, अंडरलाइन आर्टिकल 55, ऐसे लिखो आर्टिकल 55. देखो आर्टिकल 55 charges the UN to promote, charges the UN to promote universal respect and observance of, universal respect and observance of human rights and fundamental freedoms for all, fundamental freedoms of all. इसमें वो है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है, वो मैं लिखा रहा हूं. ठीक है, सेकंड लिखो आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 डैश लिखो
all members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with UN to achieve the purposes of Article 55. ठीक है? Because therefore, Article 55 and 56 combinedly bind member states to observe and respect human rights. ठीक है? Next देखो, similarly, next point. Similarly, Article 62-63 empower ECOSOC to make recommendations, and Article 68 imposes a duty on ECOSOC to set up commissions in the economic and social fields to promote human rights. ठीक, तो ये सारी चीजें क्या आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 1 आपका हो गया, फिर आर्टिकल 55, 56 कंबाइंड रीडिंग करनी है हमें. Then we have Article 62, 63 ECOSOC can make recommendations. Then we have Article 68. Then UN General Assembly should also promote studies so that international cooperation vis-à-vis human rights can be done. तो मान लो अगर ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन आया that within UN और UN Charter the golden thread of human rights डिस्कस, तो ये 5-6 चीजें बता करके अपना काम हो जाए. ठीक है? अब लिखो नेक्स्ट. ये हो गया UN का हमारा. लिखो नेक्स्ट. लिखो later on it was agreed that Bill of Rights should also be established. Okay? Because that is why UN Commission on Human Rights was established under ECOSOC in February 1946. To prepare a draft for UDHR. ठीक है? देखो, this commission established an 8-member committee headed by Eleanor Roosevelt. President Roosevelt की wife, and she is known for promoting human rights, etc. Eleanor Roosevelt, to prepare UDHR. ठीक, तो ये प्री में पूछ सकता है कि who was the chairman of the committee जिसने UDHR दिया? Eleanor Roosevelt. ठीक है? नेक्स्ट देखो, on December 1948 UN General Assembly finally adopted UDHR. ठीक है, अंडरलाइन करो, adopted. देखो, what is the significance? देखो, this marks the beginning of the competition between the Westphalian Order and dilution of sovereignty. ठीक है? तो ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? ये सॉवरेनिटी अंडरमाइन होती है फर्स्टली. सेकेंडली, स्टेट्स को रिस्पांसिबल बनाया जा रहा है कि तुम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करो, जबकि आज की डेट में स्टेट्स ही हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स ब्रीच करते हैं. तो दिस टेंशन बिटवीन वेस्टफेलियन ऑर्डर विद योर ह्यूमन राइट्स दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट. तो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ डिबेट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ पैराडॉक्स बिटवीन सॉवरेनिटी एज वेल एज डाइल्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी. ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दैट इज व्हाई 10 December 1948 is celebrated as International Human Rights Day. ठीक, ये पूरा इवोल्यूशन है यूडीएचआर का, हाउ वी केम टिल हियर. ठीक है? अब ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रेजिम में प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या बॉडीज बनाई गई हैं. वन आई टोल्ड यू, कमीशन विल स्टॉप फंक्शनिंग इन 2005. इसकी जगह कौन आएगा? काउंसिल आएगी. कमीशन के अपने लिमिटेशन थे, काउंसिल ट्राई टू ओवरकम दैट, बट अगेन देयर आर लिमिटेशंस इन काउंसिल दैट वी हैव टू सी. दूसरा है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स. यू कैन से इट इज मोर लाइक अ सेक्रेटेरिएट विद इन यूएन. जितने भी अराउंड द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड काम हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको ऑफिस प्रोवाइड करना, उनकी चैनलिंग करना, ये सब चीज ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स करता है. ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स करता है. तो उसके क्या फंक्शंस हैं वो भी हमें जानने चाहिए. देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ह्यूमन राइट्स रेजिम इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ये चारों चीज मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है that
what are the elements of human rights protection in international law. तो आप सबसे पहले बताना यूएन चार्टर, ये सारी चीजें बता दी, फिर बताइएगा कि जो बॉडीज बनाई गई हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, दिस इज व्हाट ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रेजिम इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो इसमें लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन.